Hello dear students, I am Baliyar Singh sir. Last time आमे botany रो NEET question discussion करथिले 50 question. तो आज आमे zoology रो question discussion करिवा. तो 151 देखो R2 question set हो जे R2. Zoology रो 151 R2 question set. तो first question जो अछि, three types of muscles are given as A, B and identify the correct matching pair along with the location in human body. तो এটা देखो एटी तो डायग्राम करिया संभव होनी यार आंसर अब 1 ए रहउची स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स ए रहला स्केलेटल मसल बा ट्राइसेप्स skeletal muscle that is triceps. B जोटा रही the smooth muscle that is stomach. Smooth muscles are present in stomach. So skeletal muscle present in triceps means in arms. Then C, cardiac muscle. Cardiac muscle that is present in heart. Your entire heart is made up of cardiac muscle. Your entire heart is made up of cardiac muscle. Entire heart is made up of cardiac muscle. Cardiac muscle. You know, cardiac muscles are both involuntary. Involuntary by its function and by its appearance it is voluntary or skeletal. The next question 152. Following are the stages of pathway conduction of an action potential through heart. Heart रो जो impulse टा conduction होजी को एरिया दिख पास करे से देइछ गोटे AV बंडल AV बंडल B Purkinje fiber C AV node D bundle branches E SN node. So your correct order code. Correct order of impulse pathway. This will be ECA DB. Ago eta habo SN node, then AV node, SN node, then AV node, then AV bundle, ECA, then DB, then bundle branches, then Purkinje fiber. So right answer will be 4. Then 153. Which one of the following factor will not affect Hardy-Weinberg equilibrium? को factor टा Hardy-Weinberg equilibrium को affect करिवो नहीं? Genetic drift definitely affect the Hardy-Weinberg equilibrium. Gene migration also affect. Constant gene pool एटा ही आंसर हबो जोटा कि अफेक्ट करे ने हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मध्ये अफेक्ट करे. तो करेक्ट आंसर विल बी 3 constant gene pool. Constant gene pool will not affect Hardy-Weinberg equilibrium. Then question number 154. Which of the following statement is incorrect? The answer will be 2. Bioreactors are used to produce small scale bacterial cultures.
এটা হি ইনকরেক্ট হবো। ইনকরেক্ট হচ্ছে বায়োরিয়াক্টরস আর ইউজ টু প্রডিউস স্মল স্কেল বায়ো ব্যাকটেরিয়াল কালচারস। एक्चुअली এটা কোন ঠিক था? The reactors are used to produce large scale production. Okay. Then 155. 155. Which one is the correct product of a DNA dependent RNA polymerase to the given template? ওটা given template দিয়েছি 3 dash TA CATG GCA TA TCCA TTCS C5 dash. So it is part of DNA. This is the part of DNA. तो यार करेक्ट आरएन टा कौन हो? एटा जदि गोटे टेम्पलेट हिसाब रे यूज हो यार आरएन टा कौन बाहरिबो? यार आरएनए बाहरिबो यार आंसर तो 4 हबो 155 रो 4 हबो एटा 5 डैश AU GU AU देखो T अछि एपटे A रहइबो A एपटे थायमिन रहइबोनी यूरासिल रहइबो AU GUA CCGUU CCGUU U AUA UAGGU AAGU 3 dash. It was the correct RNA from the template DNA. Then 156. 156 match list 1 with the list 2. Alpha antitrypsin. এটা দেখি নিও পিলে মানে column 1 with column 2. Alpha 1 antitrypsin cry IAB cry IAC enzyme replacement therapy one cotton ball 1 ADA deficiency emphysema corn borer. So look at it. Alpha 1 antitrypsin, this will be emphysema. Alpha 1 antitrypsin used for the treatment of emphysema. Then cry IAB will produce the protein which destroy corn borer. Then cry 1AC will produce the protein that destroy cotton ball 1. Then enzyme replacement therapy ADA deficiency. Right? Next question 157. Which of the following are autoimmune disorder? Which one of the following
autoimmune disorder. Autoimmune disorder कौन हुए? In autoimmune disorder, the cell protein destroy your cells or self cells. जिमिति की देखो गोटे माइस्थेनिया ग्राभिस कोटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नुहे ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्राभिस एटा गोटे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माइस्थेनिया ग्राभिस देन रिमाटॉइड आर्थराइटिस एटा मध्ये गोटे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिमाटॉइड आर्थराइटिस it is also autoimmune disorder. Gout टा केबे गोटे autoimmune disorder no? Gout कोन? Gout is the deposition of uric acid crystals in the joints. एटा autoimmune disorder नुहे. Then muscular dystrophy एटा मध्ये autoimmune disorder नुहे. Muscular dystrophy is not autoimmune disorder. Muscular dystrophy is not an autoimmune disorder. Then systemic lupus erythematosus eta gote autoimmune disorder. SLE systemic lupus erythematosus eta madhye gote autoimmune disorder. तो ABE option habo 1 and R2 category question ro option habo 157 ro 1 ABE eta ठीक habo এটা ঠিক হবে অটোইমিউন ডিসঅর্ডার নেক্সট কোশ্চেন 158 এটা মধ্যে গোটে কলম 1 আর কলম 2 ভলিয়া গোটে কোশ্চেন আছে ম্যাচিং কোশ্চেন রহিছে এথরে ডাউন সিনড্রোম আলফা থ্যালাসেমিয়া बीटा थैलासेमिया क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम मैचिंग होगा 11th क्रोमोसोम X क्रोमोसोम 11th chromosome X chromosome 21st chromosome 16th chromosome the Down syndrome caused due to trisomy of 21st chromosome alpha thalassemia caused due to defective gene present in 16th chromosome beta thalassemia developed due to defective gene present in the 11th chromosome Klinefelter syndrome this is X chromosome Klinefelter syndrome जो रही थी तार genetic pattern ला XY so there are 3 sex chromosome in Klinefelter syndrome next question 159 Next question 159 statement. This is a statement wise question. In the nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte. Eta incorrect achi. Eta incorrect rahibo. In the nephron, the descending limb of loop of Henle is actually permeable to water. Eta dechi impermeable to water and permeable to electrolytes. Bhul hela. Statement 2. The proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increases the surface area for reabsorption. केबे नुए एटा simple cuboidal epithelium हेल्थले ठीक हेतंदा. So both 1 and 2 statement are false. 159 रो option हबो 1. Both statement 1 and statement 2 are false. Then 160 match list 1 with list 2. एटा देखिनियो एटा ब्रेन ऊपर गोटे क्वेश्चन आसी 160
pons, hypothalamus, medulla, cerebellum. Provide additional space for neurons and regulate posture and balance. Posture and balance. Second, control respiration and gastric secretion. And gastric secretion. Third, connect different regions of the brain. Fourth, neurosecretory cells. देखो मैच करो pons, connect different region of the brain. Hypothalamus contain neurosecretory cells. Medulla control respiration and gastric secretion. Cerebellum provide additional space for neuron and regulate posture and balance. Okay, next question. 161. এটার মধ্যে গোটে ম্যাচিং কোশ্চেন, লিস্ট 1, লিস্ট 2. Axonym, cartwheel pattern, crista, satellite, then centriole, cilia and flagella, chromosome, mitochondria. मैच करो axonym हब cilia and flagella, sorry axonym रहिब cilia and flagella, yes, cartwheel, centriole, crista, mitochondria, satellite, chromosome. नेक्स्ट क्वेश्चन 162. फाइब्रस जॉइंट, ये मध्य गोटे कॉलम क्वेश्चन. देखो 162, ए फाइब्रस जॉइंट, बी कार्टिलेजिनस जॉइंट, C hinge joint, D ball and socket joint. Adjacent vertebra, that causes limited movement. Humerus and pectoral girdle, rotational movement.
rotational movement skull don't allow any movement knee help in locomotion ম্যাচ করো এটাকু তো ফাইব্রাস জয়েন্ট হচ্ছে এটা স্কল fibrous joint হচ্ছে skull don't allow any movement there is no movement of bones in the skull then cartilaginous joint adjacent vertebra দুইটা vertebra जो backbone रो जो দুইটা bone আছে তার ভিতরে যে intervertebral disc আছে সেটা হচ্ছে cartilaginous joint it causes limited movement okay hinge joint হলো knee joint and ball and socket joint humerus and pectoral girdle that causes rotational movement okay next question 163 এটা মধ্যে গোটা কলম ওয়াইজ কোশ্চেন দুইটা কলমକୁ ম্যাচ করিବାକୁ পড়ে it is a complex question so you have to do it carefully দেলা টেরোফাইলম এটা অ্যানিমাল কিংডম ରୁ আসছে এই কোশ্চেনটি টেরোফাইলম then mixin Pristis Exocoetus hagfish sawfish angelfish flying fish so pterophylum the biological name of angelfish mixin hagfish pristis sawfish exocoetus flying fish so next question 164 eta libuji 164 you see the R2 question R2 the code R2 164 so following are the stages of cell division बहुत important question eta cell division ro जो अछि stage उडा को कहा पर की आसे एटा हम सीरियल सजेउ पड़िबो जेमिति देछि A B C D E सजेउ पड़िबो G2 phase cytokinesis synthesis phase karyokinesis G1 phase कोटा हबो आगो हबो G1 phase E हबो आगो एटा 1 हबो तापरे S phase हबो 2 तापरे G2 phase हबो 3 तापरे हबो karyokinesis 4 then cytokinesis 5 okay then match list 1 with list 2 non medicated IUD copper releasing IUD hormone releasing IUD implants list 2 रे देला multiload 375 progestogen lips loop LNC20 कोन हबो ना non medicated IUD ता एटा lips loop हबो lips loop होची गोटे प्रकार non medicated IUD then copper releasing IUD एटा हबो multiload 375 hormone releasing IUD LNG20 levonorgestrel 20 then implants progestogen then 165 166 এটা মধ্যে একটা কলম কোশ্চেনটা 166 lipase होची गोटे लिपिड ब्रेकडाउन एंजाइम रे न्यूक्लियस is an enzyme that break nucleic acid then protease that break protein then amylase that break the starch amylase so peptide bond
ইস্টার বন্ড, এটা বায়োমলিকুলার আসলা কোশ্চেনটা। গ্লাইকোসাইডিক বন্ড, গ্লাইকোসাইডিক বন্ড, দেন ফসফোডাইস্টার বন্ড, ফসফোডাইস্টার বন্ড কোটা হব প্রোটিয়েজটা পেপটাইড বন্ড ব্রেক করিব, লিপেজটা ইস্টার বন্ড ব্রেক করিব। Then amylase, glycosidic bond, nuclease phosphodiester bond. Okay. Then another question 167. Expiratory capacity. Expiratory capacity. Functional residual capacity FRC, vital capacity, inspiratory capacity, এটা কোন হবো? এটা হবো দেখি দিও টিভি প্লাস, এটা ম্যাচ করে দউছি, ডাইরেক্ট কোশ্চেনটা ম্যাচ করে দউছি দেইছি। এটা ইআরভি প্লাস টিভি, ইআরভি প্লাস টিভি প্লাস আইআরভি, then TB plus ERB, then TB plus IRB, then ERB plus RB, এটা ম্যাচ করো। তো এক্সপিরেটরি ক্যাপাসিটি এটা TB plus ERB, FRC ERB plus RB, ERB plus RB, ERB plus RB, VC vital capacity ERB plus TB plus IRB, inspiratory capacity TB plus IRB, right? Then next question 168. এটার মধ্যে একটা ম্যাচিং কোশ্চেনটা কোকেন, হেরোইন, মরফিন, মারিজুয়ানা। Effective sedative in surgery, cannabis sativa, erythroxylum, papaver somniferum। The cocaine derived from erythroxylum coca plant, which is native to South America. Heroin, this is an antidepressant. Heroin is a depression, sorry, antidepressant noida. Heroin is a depression produced from papaver somniferum, marijuana, cannabis sativa, and morphine, effective sedative in surgery. Then 169, the flippers of the penguin and dolphins are, flippers of penguin and dolphins are, চারটা অপশন রয়েছে, ন্যাচুরাল সিলেকশন, কনভার্জেন্ট ইভলিউশন, থার্ড ইজ ডাইভার্জেন্ট ইভলিউশন and adaptive radiation. The answer will be divergent evolution. Flippers of penguin and dolphins are the example of a divergent evolution. 170, given below two statements, there are two statements, one is labeled as adjacent A and other is labeled as region A. Adjacent A, breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing a healthy baby. Completely correct.
कहना इनिशियल स्टेज रे जो मिल्क प्रोडक्शन होची कोलेस्ट्रॉम इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोइंग बेबी regional colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby ये मध्य ठीक अछि so both A and R is correct and R is the correct explanation of A that will be 4 the answer 4 then which of the following is not a component of fallopian tube रो कोटा component नुह isthmus ampulla infundibulum uterine fundus fallopian tube रो part isthmus हबो ampulla habo infundibulum habo but uterine fundus is not the part of the fallopian tube okay then question number 172 question number 172 typhoid leishmaniasis ringworm filariasis এটা হিউম্যান হেলথ এন্ড ডিজিজ আসলা ফাঙ্গাস নেমাটোড প্রোটোজোয়া ব্যাকটেরিয়া টাইফয়েড caused by bacteria typhoid caused by salmonella typhi leishmaniasis protozoa ringworm fungus filariasis nematoda right then another question 173 common cold hemozoin vital test allergy common cold hemozoin vital test allergy plasmodium typhoid rhinovirus dust mites so common cold rhinovirus common cold is caused by a group of more than 200 varieties of the virus it mainly infects the nose and upper respiratory tract but not to the lungs then hemozoin produced by plasmodium it is a toxic substance which is produced after the rupture of RBC then vital test is done in the case of typhoid allergy caused due to dust mites next question 174 given below some stage of human evolution arrange them in correct sequence human evolution ର जो correct sequence of time जोटा homo habilis homo sapiens homo neanderthalensis homo neanderthalensis homo erectus कौन करिया पड़े अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस पास्ट टू रिसेंट सो पास्ट टू रिसेंट हेले रिसेंट हम होमो सापियंस हम रिसेंट 4 हम एटा रिसेंट हम 4 ता पूर्व आसिले होमो निएंडरथालेंसिस 3 देन ता पूर्व आसिले होमो इरेक्टस 2 एंड सबुठु बहुत पुराना होची होमो हाबिलिस 1 then 175 given below two statement one is labeled as accession and other is labeled as region a FSH act upon ovarian follicle of the female and Leydig cell in male ए ऑप्शन टा भूल अछि FSH act upon ovarian follicle in female this is correct but FSH टा Leydig cell ऊपर काम करिनी FSH टा Sertoli cell ऊपर काम करे तने एटा भूल होला Region है growing ovarian follicle secrete estrogen in female with the while interstitial cell secrete androgen in male human being
এটা भी ठीक अछि तो adjacent टा रॉन्ग अछि रीजन टा करेक्ट अछि तो आंसर टा हबो 3 A is false but R is true 176 176 which of the following is not a steroid hormone testosterone steroid hormone हबो progesterone मध्ये गोटे steroid hormone हबो ग्लूकागन टा गोटे steroid hormone आंसर हबो ग्लूकागन cortisol टा मध्ये गोटे steroid hormone so आंसर होची ग्लूकागन 176 रो आंसर होला ग्लूकागन 177 consider the following statement annelids are true coelomate ठीक अछि annelida माने true coelomate माने होची the first coelomate animal b poriferans are pseudocoelomates ये भूल हबो को माने केवल pseudocoelomates round arms are only pseudocoelomates ascalminthes are acoelomates एटा भूल हबो because ascalminthes or round arms are pseudocoelomates platyhelminthes are pseudocoelomate ये भी भूल because platyhelminthes are acoelomates so answer टा केवल ए टा ठीक हबो only 178 एटा गोटे मैचिंग क्वेश्चन टे डायकाइनेसिस पैचिटिन जाइगोटिन लेप्टोटिन मन रखा जो डायकाइनेसिस टा एटा हबो कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमा टा पैचिटिन हबो appearance of recombination nodules जाइगोटिन जो रहिची एटा synaptonemal complex formation हबो आ लेप्टोटिन हबो क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स 178 रो 2 हबो एटा R2 क्वेश्चन सेट then 179 which of the following factor are favorable for the formation of oxyhemoglobin alveoli eta केवल हबो high PO2 and less H+ in the alveoli high PO2 higher partial pressure of oxygen is favorable for combination of oxygen with hemoglobin and lesser H+, lesser proton concentration is also essential for the formation of oxyhemoglobin inside the alveoli. Then 180 in both sexes of cockroach रो दीटा सेक्स मेल और फीमेल सेक्स रे जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड anal circular present एटा को सेगमेंट रे 10th सेगमेंट हबो ना 8th और 9th सेगमेंट हबो ना 11th सेगमेंट हबो ना 5th सेगमेंट हबो आंसर हबो 10th सेगमेंट सो 180 रो 1 हबो आंसर 10th सेगमेंट रे उभय सेक्स रे एटा anal सर्किल देखा जाय देन आ गोटे मैचिंग क्वेश्चन अछि 181 प्लूरोब्राचिया राडुला स्टोमाकोड एयर ब्लैडर प्लूरोब्राचिया राडुला स्टोमाकोड एयर ब्लैडर मोलस्का टिनोफोरा ऑस्टिस्थाइस हेमिकोडाटा प्लूरोब्राचिया टिनोफोरा राडुला मोलस्का स्टोमाकोड हेमिकोडाटा एयर ब्लैडर ऑस्टिस्थाइस तो नेक्स्ट क्वेश्चन TI plasmid of agrobacterium এটা 182 क्वेश्चन नंबर 182 TI plasmid of agrobacterium tumefaciens stand for এটা হবে आंसर 2 tumor inducing plasmid 183 given below two statements statement 1 को कहला the presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity it's correct hymen thau ba no thau it is not the reliable indicator of virginity second option the hymen is turned during the first coitus only ना hymen first sexual intercourse सबले ब्रेक हुएनी ऑप्शन टा स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट अछि सो इट ऑप्शन नंबर 2 स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स 184 रो गोटे PBR 322 एटा गोटे मॉडिफाइड प्लाज्मिड टा फर्स्ट आर्टिफिशियली डेवलप्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेटा देछि ओरी पाखरे x देछि से x रो माने कोन एटा ऑप्शन नंबर 1 द जीन x is responsible for controlling the copy number linked
DNA, and Y for protein involved in the replication of plasmid. Option of 1. Then 185. Which of the following is not a natural or traditional contraceptive method? Natural বা traditional contraceptive method কোটা নুহে? Periodic abstinence টা ওটা natural, lactational amenorrhea মধ্যে natural, coitus interruptus be natural. 3 answer হবে 3 Vols টা natural নুহে. 186. Exothalamic goiter, acromegaly, Cushing syndrome, creatine gym. आम एटाको सेकेंड ऑप्शन सहित मैचिंग करिवा. एक्सोथैलेमिक गॉइटर जोटा हेबो हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आईबॉल. acromegaly हेबो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. adult stage रे बेजी एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन acromegaly करेबो. then Cushing syndrome why Cushing syndrome develops? Due to excess secretion of cortisol. यार जो लक्षण रही मून फेस एंड हाइपरग्लिसेमिया. देन क्रेटिन जिम एटा हबो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ. क्रेटिन जिम एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ अंडर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ. 187 देछि गोटे. GnRH LH B तो ABCD कौन हबो? एटा हबो FSH. LH एटा हबो FSH एटा लीडिंग से माने B टा हबो. LH टा माने प्रोड्यूस करिवो काको अफेक्ट करिवो लीडिंग सेल को. C टा हबो सटोली सेल. FSH टा सटोली सेल ऊपर काम करिवो. से किसी फैक्टर करिवो रिलीज एवं सेटा कोन करियो ना स्पर्मियोजेनेसिस करियो. ओके